मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आर यू टेकिंग प्रिकॉशंस अबाउट कोरोना? बहुत दिनों से हमने बात नहीं की इसके बारे में, और पॉल्यूशन भी है, और कई बेबीज बाहर भी जा रहे हैं। तो बाहर when we will go out, what we should do? We should wear the mask. It protects us from the coronavirus. यदि कोई स्नीजिंग करता है तो क्या होगा? वो अपनी स्नीजिंग से स्प्रेड करता है। तो while wearing the mask, जो स्नीजिंग करेगा तो मास्क के बाहर नहीं आएगी, किसी दूसरे के फेस के ऊपर जर्म्स नहीं जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगेन एंड अगेन वी शुड वॉश आवर हैंड्स। वी कैन यूज द सैनिटाइजर ऑल्सो, बट सैनिटाइजर कम यूज करना है। वाई? क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। So we should wash our hands again and again. Okay? और जब हम कभी बाहर से आते हैं घर, तो we should change our clothes. We should wash our hands. We should wash our feet. If it is possible, we should take a bath. वैसे तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मम्मी पापा भी जाते हैं, तो they should take precaution. Okay. Now our today class is English class. And which topic? Already we have done A sound and O sound. Today I will teach you sound of I. See? This pink color, this is I. I says E. It gives the sound E. I says E. And today I will teach you eat, it words. Okay? Eat, it. See. The word is eat, it. And this is lit. We will put L before it. L लगा दिया तो ये बन गया ल इट lit. And what is lit? ये कैंडल की जो ये लो होती है, इट इज कॉल्ड lit. ये कैंडल की जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड lit. ल इट lit. And this, what is this? ये वाला this mark आप कहाँ देखते हो? Where you can see this mark? On the medical kit. मेडिकल किट के ऊपर देखते हैं, जब डॉक्टर एक किट लेके आते हैं, यू कैन सी दिस मार्क्स ऑन देयर. और कहाँ देखते हैं? हॉस्पिटल के बाहर. और कहाँ देखते हैं? वेयर? एम्बुलेंस के ऊपर. और एम्बुलेंस में तो मेडिकल किट जरूर होती है. So, see, bandage, medicines, all things are we keep in the medical kit. This is called kit. Again, we will write here it. Before it, we will write here K. अब आप बोलो कि मैम सी की साउंड होती है क, लेकिन यू रिमेम्बर दैट हमने के की साउंड में भी क ही सिखाया था आपको. क ईट किट. ओके. दिस बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर. सिट. सिट. किसी भी चीज के ऊपर बैठने को बोलते हैं सिट. अगेन eat, it. This boy is sitting, so sir. Sir, eat, sit. Sir, eat, sit.
रोड पे जाते हैं तो रेनी डेज के अंदर वहां पे आपको कई बार वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी भर जाता है एंड वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और कई बार तो बेबीज क्या करते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है तो टक 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 करके जंप करते हैं। उस गड्ढे में पानी भर जाता है तो जंप करते हैं। दैट गड्ढा इज कॉल्ड पिट। ओके, जब बड़ा सा उसके पे मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ऑन द अर्थ, वहां पे एक गड्ढा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पिट। Pit, 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 pit. Now see, there is a dog, और वो dog bite this man. Bit. क्या कर लिया उसने? Bit. काट लिया उसको, पकड़ के। कई बार हमको इसीलिए बोलते हैं ना, स्ट्रीट डॉग से थोड़ा पीछे होके जाना चाहिए। स्ट्रीट डॉग क्या करते हैं मालूम नहीं, कभी भी किसी को बिट कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं। तो अगेन इट बिफोर इट वी विल पुट bite, bit. Put the dot here. Bite, bit. ये देखो, इसको कर रहे हैं ना, लेग के ऊपर, उसको यहाँ लेग के ऊपर बिट कर। और ये क्या कर रहे हैं? He is playing cricket. और इसने बॉल को क्या किया? क्रिकेट में क्या करते हैं बॉल को? What we will do in the cricket? Hit the ball. Hit. What we will do? Before it, we will put here it hit. And what this boy is doing the exercise. Why? To keep our body fit. हमको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए we should do exercise. Again, eat के आगे we will put fur, it, fit. Again, one more time we will revise. Eat, light, lay, kite, ke, sight, say, bite, pay, bite, bait, height, hay, fight, fit. Now, what you will do? You will read all these words from your book. Just read. You will not write. Just read again and again. So today we have done it words. और जितनी भी यहाँ पिक्चर्स हैं रिलेटेड जो आज हमने किए हैं, you will do 2 sentences, speak 2 sentences about that. Sit on the sofa. This is the kit of my makeup kit और शेविंग किट। और वो दिखा के आपने बोलनी है डू नॉट हिट। बॉल को हिट कर रहे हैं, आई एम हिटिंग द बॉल, आई एम वेरी फिट। एक्सरसाइज करते हुए दिखाएंगे और आई एम वेरी फिट। कोई भी गड्ढा दिख रहा है तो दिस इज अ पिट एंड वाटर इज देयर इन द पिट। और बिट, डॉग यदि काट रहा है किसी को तो इज अ बिट। डू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज और वीडियो बनाएंगे और अपनी टीचर को भेजेंगे।